Hey, easy day. So I had mentioned in last two post-market analysis that if a candle closes below 18,600, I'll look for shorting opportunities. First 1 hour candle closed below 18,600. So how will I trade this? This becomes my stop loss. This candle high. I'll go to a smaller time frame. I usually look at 3 minutes in this case. So if you're watching again my post-market, I usually look for a candle. So this was I think 10-15 close. After this I will look for any close below 10 moving average. Stop loss becomes this high. Target was gap fill. So yesterday also I was looking for a gap fill, which did not happen. So today also this line is gap fill. So as soon as this candle closed, I exited. Also, if you apply the same rule, mostly it won't. It is risky, but in this case it's a 30-point risk and gives you 60-point target. So what is the trade? So once the gap was filled, look for any closing in 3 minutes above 10 moving average. Stop loss becomes day low. Same thing, does not break day low. 6.7 was 6.6 was the low. After this candle, which came near day low, was 6.7, gave you almost 5.1. Did not take this trade, only took this. So yeah, had a system trade which did not trigger. So one of the reasons I did not take this is because I had a short trade in my system, which I usually share. So that did not trigger. Trade was sell below 1. It broke 1, and this is what I was expecting on the downside. So what am I expecting tomorrow? This is the line which where you see a gap. So what do I expect tomorrow? 420 to come. I don't know if it is going to come, but yeah, I am expecting that to come. Let's see. थैंक यू. तो सिंपल था. मैंने अगर आप मेरा लास्ट 2 पोस्ट मार्केट देख रहे हैं तो मैंने बोला था कि 1 आवर क्लोज अगर 18,600 के होगा नीचे होगा तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा. 1 आवर कैंडल क्लोज 18,600 के नीचे हुआ है. शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अच्छा रिस्क रिवॉर्ड. मैं 3 मिनट्स में आता हूँ. अगर आप फिर से मेरा पोस्ट मार्केट देखते हैं तो ये ट्रेड मैं यूजुअली कैसे लेता हूँ, रिवर्सल्स को कैसे खेलता हूँ, 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने देता हूँ और स्टॉप लॉस जो होता है वो उसको लगा देता हूँ. सिंपल. मैं अगर कल का पोस्ट मार्केट आपने देखा है तो उसमें मैं गैप फिल का वेट कर रहा हूँ 2 दिन से. तो वही टारगेट है मेरा. ये लाइन गैप फिल है. तो यहाँ पर ये 10-15 क्लोज हुआ. यहाँ से 1 आवर नया शुरू होता है. यहाँ पर क्लोज हुआ 10 मूविंग एवरेज के नीचे. यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होता है और टारगेट ये कैंडल ब्रेक पे. अब सेम लॉजिक अगर आपको रिवर्सल करना है आप कर सकते हैं. मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सिस्टम ट्रेड में मेरा शॉर्ट आया था 1 के नीचे सेल. 1 का लो नहीं टूटा, 1 का हाई टूटा, तो उसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन मैंने नहीं किया वो ट्रेड. इसमें क्या है ट्रेड? सेम लॉजिक. 10 मूविंग एवरेज एक बार गैप फिल हो गया, कोई भी 3 मिनट्स में कैंडल 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, स्टॉप लॉस बिकम्स डे लो. और इस केस में स्टॉप लॉस तो 6.7 गया, वहाँ से उसने दिया 5.0 और ये भी एक अच्छा रिवर्सल था, नहीं किया मैंने. अब कल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली मैं चाहता हूँ ये आए नीचे, इसका अपर एंड से लोअर एंड 420. पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखते हैं. सुबह तो मैं देखूँगा कैसे क्लोज हो रहा है 1 आवर, उसके बाद डिसाइड करूँगा. मेरे को क्लोजिंग तो अच्छी नहीं लग रही है, तो देखते हैं. थैंक यू.